So, my dear friends, let's start today's class, and it's about the word addict. I'm the person who wakes up in the morning and the first thing I do, and that is I drink tea. When I finish my breakfast, I drink tea again. When I'm just going to my office, I drink tea again. And when I reach my office, there is one chai wala bhaiya tea vendor. Right? I just park my scooty and I go to him and just say to him, bhaiya, get me one cup of tea. So now you can imagine that by the time I reach my office, I finish 3 or 4 cups of tea. And before starting my batch at 3 o'clock, I drink tea again. And around 6 o'clock, if some students are going downside to have tea, I just say to them, who is going downside? They ask me, sir, why? What happened? Yeah, please, when you come upside, please get me one cup of tea. So every student says to me, sir, your condition is pathetic, बहुत खराब है. Know why? You can't do without tea, sir. मिस आप चाय के बगैर नहीं रह सकते. जब भी आप किसी के बगैर नहीं रह सकते, it means you can't do without it. Just say, I can't do without my students. And you can say to your girlfriend, my sweetheart, my babu, my shona, my adu, I can't do without you. मैं मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता. I can't do without love. मैं मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता. I can't do without mobile. So like that. तो जब भी आप किसी के बगैर नहीं रह सकते तो आप बोलेंगे I can't do without. And जिसके बगैर आप रह नहीं सकते तो आपका मन करता बाबा करने का. आप चाहते हैं, you want that you should stop that work, but what to do? You can't help it. आप रोक ही नहीं पा रहे. So it means when you are not able to stop yourself from doing any work, it means you are addicted. Yes, you are addicted, my dear friend. किस चीज के बारे में ऐसे? What are you addicted to? जी हाँ, what are you addicted to? आपको किस चीज की लत है? तो आप कुछ ही बता दीजिए. कोई काम है तो उसमें आप आइंज लगा दीजिए. और अगर कोई चीज का नाम है तो उसका नाम लगा दो. कोई इंसान है, इंसान का नाम लगा दो. जैसे भाई मुझे चाय की लत है, आई एम एडिक्टेड टू टी. भाई मुझे स्मोकिंग की लत है, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग. मुझे तुम्हारी लत है, आई एम एडिक्टेड टू यू. मुझे मोबाइल की लत है, आई एम एडिक्टेड टू मोबाइल. ऐसे मुझे ड्रिंकिंग की लत है, दारू की, आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग. आपको किस चीज की लत है? व्हाट आर यू एडिक्टेड टू? आप चाहे तो ऐसा भी ऐसे ही बोल सकते हैं. आप चाहे तो इफ यू वांट could speak it in this way. मुझे चाय की लत है. यहाँ पे ए या एन जरूर लगाएं. I'm a tea addict. जी हाँ, मुझे चाय की लत है. I'm a tea addict. मुझे मूवी की लत है यार. I can't stop. Whenever any new movie releases, I just run to where? Baby Mall. Right? And I watch first day, first show. Because I'm a movie addict. या फिर I'm addicted to movie. Whatever you want, you could go for that. ऐसे मुझे अंग्रेजी की लत है यार. I'm an English addict. या फिर I'm addicted to English. Like the way मुझे मोबाइल की लत है. I'm addicted to mobile. या फिर I'm a mobile addict. Or you could say that I'm a mobile addicted. इसको छोड़. मुझे टीवी की लत है. I'm addicted to TV.
या फिर I'm a TV addict. Now tell me. Or now tell me, what are you addicted to, man? Right? Have you understood the word addict and addicted? The rules I'm writing over here just to write down, right? You write down the rules and just use them in your communication and see the magic, right? Thank you very much.